I hope you guys are able to see my screen. I hope I'm you audible. guys are able to. हाँ 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 Hi, we are live here, and I hope you are able to see the topic of this live stream. We are going to create a full stack application without writing a single code. I'm waiting for you guys to join. Yeah, I'm waiting for you guys to join. Quickly, you can just join, and we will start the topic, and we will start in 10 minutes. creating the this application for you. I hope this will be the best video for your life. I think it will change your entire coding journey. If you are a developer, if you are not a developer, you are gonna learn how to create a full stack application. If you have any idea or if you have any prototype ready, you can easily convert into the live running site. Yes, so hey guys, we are waiting for you to just join this live stream. This is the very first time I am live here with the Coding Spy channel. I hope you have already checked this channel. This is related to the tech videos, related to the different like Flappy and the different technologies. We are continuously uploading the videos. I hope you have already subscribed. If not subscribed, kindly subscribe our channel. Okay, there is one user. I think someone has joined. Anand, I'm audible to you. Yeah, yeah, you are audible. So Uh, yeah, with me, I joined your call. Satya is here. Okay, join the call. You can see the Satya is live with me. In 10 minutes, you can start with your application development. We will start in 10 minutes. So we are going to use the Firebase Studio to build our platform. Uh, Let me introduce about the Firebase if you don't know about what is the Firebase. So let's keep it in Hindi. So I can keep it in English kind of. So आप भी समझ सकते हो एंड हमें भी बहुत ही मजा आएगा इस लाइव स्ट्रीम को रन करने में। सो आज हम लोग क्या जानने वाले हैं, सो मैं एक बेसिक सा आइडिया आपको दे देता हूँ। आज के इस टॉपिक में बेसिकली हम एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाएंगे इस लाइव में ही, जो कि पूरी की पूरी तरह से रनिंग होगी, लॉगिन साइन अप सारी की सारी फंक्शनलिटीज होगी वहाँ पे। साथ में ही उस एप्लीकेशन में और भी फीचर्स हम लोग ऐड करेंगे, और विदाउट राइटिंग एनी सिंगल लाइन ऑफ कोड। ये पॉसिबल है अभी के टाइम में। और आप अगर आप इस फील्ड से हो ऑलरेडी, तो आपको पता होगा फ्रंट एंड बैक एंड क्या होता है। तो फ्रंट एंड में हम लोग नेक्स्ट जेएस की यूज करने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छी एक लाइब्रेरी है रिएक्ट जेएस की फ्रेमवर्क इसमें। सो हम लोग इसका यूज करने वाले हैं नेक्स्ट जेएस का, और इससे हम लोग एक पूरी की पूरी फ्रंट एंड तैयार करेंगे, और साथ में बैक एंड में हम लोग फायरबेस को यूज करने वाले हैं। फायरबेस की मदद से, जो कि बैकएंड एज ए सर्विस है, गूगल की एक प्रोडक्ट है। इसकी मदद से हम लोग पूरी पूरी बैकएंड बनाएंगे और साइट को लाइव करने वाले हैं। सो मैं वेट कर रहा हूँ कितने लोग ज्वाइन करते हैं। Okay, बस स्टार्ट करते हैं हम लोग फिलहाल। हाँ, okay।
सबसे पहले मैं अपने फाइरबेस की स्टूडियो आपको सर्च करना है, जहाँ पे आपको चले जाना है। फिर यहाँ से गेट स्टार्टेड करना है। मैंने अकाउंट अपना ऑलरेडी बना रखा है, सो आपको अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं होगी। आपको सिंपली फाइरबेस स्टूडियो में अपना अकाउंट क्रिएट करना है। और यस, आपके सामने एक फाइरबेस स्टूडियो का जो डैशबोर्ड होगा, जहाँ से हम लोग प्रॉम्प्ट की मदद से पूरी की पूरी एआई ही यूज करने वाले हैं अपने एप्लीकेशंस को बनाने के लिए। और काइंड ऑफ एक हम लोग टास्क मैनेजर बना सकते हैं। अगर आप लाइव हो तो आप गेस कर सकते हो हम लोग क्या बनाए। अ, मैं सोच रहा हूँ एक टास्क मैनेजर बनाते हैं, जिसमें हम लोग डेली अपना जो भी टास्क करते हैं उस टास्क को वहाँ पे मैनेज कर सके, राइट। एक ऐसा बना सकते हैं जिसमें लॉगिन साइन अप होगा। इसलिए हम लोग लॉगिन साइन अप को रखेंगे। लॉगिन विथ गूगल का भी ऑप्शन आप रख सकते हो। लॉगिन विथ गूगल का ऑप्शन रख सकते हो, बट इसके लिए आपको एप्लीकेशन को लाइव जाना पड़ेगा। इट मीन्स आपको एक डोमेन्स लेने, आपको एक साइट को होस्ट करना पड़ेगा, तो ये फीचर्स रनिंग होगा। सो अभी हम लोग करते हैं। मैं ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बना चुका हूँ। सो चलते हैं, एक हम लोग एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखते हैं कि हमें क्या चाहिए। सो प्रॉम्प्ट है, आई वांट टू बिल्ड अ टास्क मैनेजर ऐप टास्क टास्क। सेट ट्रेंडिंग प्रोग्रेस completed. Okay. Okay. This will be our prompt, and I will click on the prototype with AI. Okay. So I want to build a task manager app which has the functionality to create a task, manage task, update task, and what we can do. All the tasks and the status of the task is currently we can say incomplete, right, or in progress or completed, right. Also, if you see there, so हमारा जो भी फाइबर्स स्टूडियो था, इसने एक नेम दे दिया है टास्क जेन करके हमारे एप्लीकेशन को। आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हो। आपको कलर अगर चाहिए तो कलर भी आप चेंजेस कर सकते हो। साथ में यूजर ऑथेंटिकेशन का एक लैंडिंग पेज दिया हुआ है, टास्क क्रिएशंस के लिए दिया हुआ है, टास्क मैनेजमेंट, टास्क एडिटिंग एंड एआई सब टास्क जनरेटर भी दिया हुआ है। इट मीन्स आप जनरेटिव एआई का यूज करके टास्क को जनरेट भी कर सकते हो, सब टास्क बना सकते हो। इसमें जो स्टैक यूज कर रहे हैं वो टाइप स्क्रिप्ट, नेक्स्ट.js, टाइलविन सीएसएस यूज कर रहा है। और एआई में जेमिनाई और जेनकिट यूज कर रहा है। लेआउट्स कैसा रखेगा? क्लीन कार्ड बेस्ड लेआउट रखेगा, तो क्लियरली प्रेजेंट ईच टास्क विथ इंस्ट्यूटिव ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनलिटी फॉर टास्क मैनेजमेंट, लाइक कैनवन बोर्ड जैसा होगा। टाइपोग्राफी वो स्पेस ग्रोटेक्स यूज कर रहा है। एंड आइकोनोग्राफी एनिमेशन यू कैन सी। और आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, आप इसका नाम कुछ और देना चाहते हो तो दे सकते हो, जैसे कि मैं इस केस में टास्क कोडिंग इस फाइल टास्क ऐसा नाम दे रहा हूँ। ठीक है, अपने एप्लीकेशन का। ठीक है, कोड फीचर्स आप चेंज भी कर सकते हो, आपको अगर कुछ चाहिए तो। ठीक है, यूजर ऑथेंटिकेशन लैंडिंग पेज विद द लॉगिन एंड साइन अप फंक्शनलिटी टू ऑनबोर्ड न्यू यूजर्स, राइट। ऐसा कुछ है। तो अभी के लिए इसको सेव करते हैं, आप चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन का नाम चेंज हो चुका है, कोडिंग स्पाई टास्क आ चुका है। बाकी फीचर्स में हमने कोई चेंजेस नहीं किए। कलर्स में हमें अच्छा लग रहा है, तो कलर्स में भी हमने कोई चेंजेस नहीं किया है। आप अपने कस्टम कलर्स को भी ले सकते हो, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट हमारा है कि प्रोटोटाइप जिस ऐप पे क्लिक करते हैं। सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और पूरी की पूरी कोड को लिखेगा।
अब इसमें क्या होता है ना, वन टाइम आप पूरी की पूरी प्रॉम्प्ट को नहीं दे सकते हो, आपको एक स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। क्या होता है ना, बहुत टाइम हम लोग पूरी पूरी प्रॉम्प्ट लिख कर आते हैं, तो एक साथ बहुत सारी फंक्शनैलिटीज को आप नहीं ऐड कर सकते हो, बट वन बाय वन करके हम लोग सारी फंक्शनैलिटीज को देखेंगे। फिर भी हमें फ्रंट एंड में बहुत सारी ऐसी फंक्शनैलिटीज मिल जाएगी, हमें उसमें कुछ भी इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, कुछ भी कस्टमाइज करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे। और देन हम लोग फायरबेस का यूज करेंगे। सो आप देख सकते हो, मुझे कोडिंग लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एक लाइन का भी मैं कोड नहीं लिखने वाला हूँ। और हमारा कोड ऑप्टिमाइज भी होगा। आप कोड को भी देखें, हम लोग कोड को भी देखेंगे, और साथ में बैकएंड को यूज करेंगे। आई होप हमारी कुछ सी बड़ी होगी यूजर्स में। अच्छा, कॉन्करेंट 4 व्यूज है टोटल। ओके, 4 व्यूज, टू टू कॉन्करेंट व्यूअर्स है। वेरी गुड। ओके, there is no any comments, right? I am waiting for the comment. You can chat here. Uh, I want to response. If anyone watching this live, you can comment. कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी। We are live। और अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम लोग आएंगे लाइव वीकली। सी, देखते हैं। हमें हमारे एप्लीकेशंस को बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अ, कि अभी पूरी 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 एप्लीकेशंस के फ्रंट को रेडी किया जा रहा है। आप देख सकते हो, कंपोनेंट वाइज ये बनाता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट जैसा आप पहले से ऑलरेडी बहुत ही बेहतरीन फ्रेमवर्क्स बोल सकते हो आप। सी, 5 व्यूज आ गए हैं, 1 कंटेंट व्यूअर्स है। लेट्स सी। सो हमारा देख सकते हो अभी कोडिंग यहाँ पे चल रहा है, जो कि एआई कर रही है। ये स्टूडियो, जो फायरबेस स्टूडियो की बात कर रहा था, बहुत ही बेहतरीन टूल है। मैंने इस पे बहुत ही अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस बनाई है। मैं आपको लाइव डेमो भी दिखाऊंगा अपने भी एप्लीकेशंस का। आ, वो अभी लाइव है, प्रोडक्शन में चल भी रही है। ऑलमोस्ट मेरे उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पे ऑलमोस्ट 20-25 कंटेंट वीडियोस हो चुके हैं, जो कि डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं। सो आप कुछ भी बना सकते हो, आपके पास अगर कोई आइडिया है तो आप यहाँ से बना सकते हो। जस्ट आपको अगर बैकएंड का नॉलेज है अच्छे से, इट मीन्स अगर बैकएंड का थोड़ा भी नॉलेज है, तो आप अपना खुद का बैकएंड भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो फ्रंटएंड का कोड लिखवा कर। अदरवाइज फायरबेस से भी बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन बनाया जा सकता है। कुछ लिमिटेशंस है जिसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पे बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है, जो कि आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलने वाली है। अभी आप देख सकते हो, हमारा बहुत ही बेहतरीन एक लॉगिन एंड साइन अप का पेज क्रिएट हो चुका है। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन है इंटर योर जेमिनाई एपीआई की, तो हम लोग ऑटो जनरेट करवा लेते हैं। एक फीचर्स तो मैंने इसको दिया था कि एक मुझे बेहतरीन अच्छा लैंडिंग पेज चाहिए, जो कि अभी नहीं आया है। बट हम लोग एक लैंडिंग पेज बनवाते हैं, फिर लॉगिन साइन अप पे हम लोग नेविगेशन से आएंगे। ये आप देख सकते हो, एक लॉगिन साइन अप का पेज हमारा क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो। कुछ भी हम लोग देते हैं, टेस्ट gmail.com। भी लॉगिन सक्सेसफुल, यू कैन सी। क्योंकि यहाँ पे भी ऑथेंटिकेशन हमने नहीं डाला है, तो यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल दिखा रहा है। आई होप कि मैं ये नेक्स्ट पेज में रिडायरेक्ट करते डैशबोर्ड वाले पेज पे देखते हैं। क्योंकि अभी तक हमने ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो नहीं भी रिडायरेक्ट कर सकता है। हम लोग उस पेज को बनाना पड़ेगा, डैशबोर्ड की पेज को। बट चेक कर रहे हैं हम लोग कि इसको लॉगिन के बाद ही किसी पेज पे लेकर, हाँ, देख सकते हो आप, कोई नेक्स्ट पेज पे हमें लेकर भी जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी और प्रॉम्प्ट में डालूँ, कुछ भी डाल सकते हैं। और सो आप देख सकते हो, यहाँ पर मुझे नेक्स्ट पेज में लेकर आ चुका है, और ऐसा कुछ डैशबोर्ड इसने बनाया है। इसमें कुछ स्टेटस पेंडिंग दिख रहा है, कुछ इन प्रोग्रेस है, तो मैं इन प्रोग्रेस में डाल पा रहा हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप काम कर रहा है। और हमारा अगर देख सकते हो, कुछ बाय डिफॉल्ट वो डेमो वाले डेट भी दिखा रहा है, जो कि स्टेटस हमारा अपडेट भी हो रहा है। तो एक टास्क कोड हमारा क्रिएट हो चुका है। यहाँ से क्रिएट टास्क का भी ऑप्शन है, जहाँ पे हम लोग टास्क को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग एक टास्क क्रिएट करके देख लेते हैं। टेस्ट क्रिएटेड एंड ड्यू डेट बस कर देते हैं। ऐड टास्क करते हैं। सो टेस्ट वाला अभी तक हमारा ऐड नहीं हो रहा, राइट?
सो क्योंकि हमारे पास कोई बैकएंड नहीं है इसलिए वो ऐड नहीं हो रहा है। बट ये हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप काम कर रहा है, यहाँ पे यूजर्स का भी आ चुका है, यूजर एग्जाम्पल डॉट कॉम बाई डिफॉल्ट यूजर ले रहा है, राइट। सो अब इसको लॉग आउट करते हैं। कोडिंग स्पाई टास्क आ चुका है। अभी हम लोग इसका एक अच्छा सा पहले लैंडिंग पेज क्रिएट करते हैं। सो प्रॉम्प्ट रहेगा क्रिएट अ प्रोफेशनल मॉडर्न लैंडिंग पेज। नहीं प्रॉम्प्ट देते हैं, देखते हैं हमें बस चाहिए क्या, एक प्रोफेशनल एंड मॉडर्न लैंडिंग पेज चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आगे का प्रॉम्प्ट देंगे। अभी हम लोग थोड़ा जो बेसिक यूआई का जो काम है वो करवा लेते हैं, फिर हम लोग फायरबेस और बैकएंड की तरफ जाएंगे। आप इसे कलर में चेंजेस भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपको लगता है कि कोई और कलर ले सकते हो, आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, चलेगा। ओके, अभी हम लोग देखते हैं हमारा लैंडिंग पेज कैसा क्रिएट करके दे रहा है। फिर अगर आपके पास कोई इमेजेस है, कोई कोई सा भी, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल टास्क मैनेजर वेबसाइट डिजाइन, आपके पास कोई फिग्मा का फाइल है या कहीं से कोई इमेज है, सो आप वैसा भी वेबसाइट बनवा सकते हो इससे। बस आपको एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि मुझे कुछ अगर किसी इमेज के जैसा बनवाना हुआ तो ये बनाकर दे रहा है कि नहीं, उसकी भी टेस्टिंग हम लोग कर लेते हैं। जी, आप देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन हमारा लैंडिंग पेज आ चुका है। एक मॉडर्न लैंडिंग पेज जो कि इमेजेस अभी वो जनरेट नहीं कर पा रहा है, लेकिन जिस गेट स्टार्टेड को फ्री एक अच्छा सा, अगर फोन व्यू में भी अगर मैं देखूँ तो फोन व्यू का भी आ, ठीक है। थोड़ा सा तो इसमें हमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, इतना कुछ खास नहीं आया फोन व्यू के लिए, रिस्पॉन्सिव नहीं है। इसको रिस्पॉन्सिव हम लोग बना सकते हैं, ओके। तो हम लोग वो भी करेंगे। अभी देखते हैं ऐसा कुछ अगर ईमेल बना के दे दें हमें, सो बहुत ही बेहतरीन होगा। ठीक है, कुछ लैंडिंग पेज देखते हैं। टास्क मैनेजर सो टास्क, ओके, चलो ऐसा क्रिएट करवाते हैं, ओके। कॉपी इमेज करते हैं, ठीक है, डन, चलेगा। ऐसा क्रिएट करवाते हैं, बोलते हैं क्रिएट जो अच्छा कुछ मुझे लैंडिंग पेज चाहिए, देखता हूँ ये बनाकर देता है कि नहीं। ओके, ठीक है। आई होप यहाँ पे ओके 9 व्यूअर्स आ चुके हैं, बट मुझे कमेंट्स एक भी नहीं दिख रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हो चैट में आकर, हम लोग बात कर सकते हैं। आज ही फर्स्ट टाइम मैं लाइव आया हूँ कोडिंग स्पाई से। हाँ, सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। ऑलमोस्ट 18 और 19 मिनट्स जैसा हो चुका है। आ, ऐसा ऑन एन एवरेज हम लोग 1 आवर जैसा जाएंगे, और बहुत ही बेहतरीन वीडियो रहेगी। ओके, थोड़ी सी बारिश हो रही है हमारी तरफ, इसलिए पावर का इशू है, देख सकते हो। देखते हैं कब तक चलते हैं। ओह, भी लाइट भी आ गई। ओह, सी, ओह माय गॉड, क्या बात, काफी बेहतरीन, राइट, एनिमेटेड। ओके, यू कैन सी, ओह माय गॉड, द लैंडिंग पेज, यू कैन सी, काफी एनिमेटेड हमें बनाकर दिया है। ओके, एंड मैं चाहता हूँ कि ऑप्टिमाइज
this page and make a full landing page, not messy, not messy. Use the picture, picture, और देख सकते हो आप, बहुत ही बेहतरीन है बनाकर दिया। एनिमेशन भी बहुत अच्छे से यूज किया है। जस्ट उसका जो प्लेसमेंट था ना, वो गलत जगह पे हो गया है। थिंक प्लान एंड ट्रैक ऑल इन वन प्लेस, एफिशिएंटली मैनेज, गेट फ्री डेमो एंड साइन इन, प्राइजिंग, फीचर्स, सॉल्यूशंस, एवरीथिंग जो भी इसमें था उसने सब कुछ दिया है। जस्ट प्लेसमेंट उसका अच्छा नहीं था। वो सी लॉग इन पेज और साइन अप भी बहुत ही बेहतरीन बनाकर दे चुका है। साइन इन करके जाते हैं तो हमारा आई थिंक अंदर डैशबोर्ड भी बहुत अच्छा होना चाहिए। सी आप देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन ने बनाकर दिया है। लुक लाइक अ रियल एप्लीकेशन, और ये रियल है भी। राइट, अभी तक हमने कुछ भी कोड नहीं लिखा है, जस्ट प्रॉम्प्ट, यू कैन सी। एंड अभी हम लोग और ऑप्टिमाइज कर रहे हैं अपने स्क्रीन को गाइस। इसके लिए एक लाइक तो बनता है हमारे वीडियो को। See, हाँ, बहुत ही बेहतरीन यूआई आप देख सकते हो। यूआई बहुत ही बेहतरीन है। मुझे चाहिए कि इसमें थोड़ा सा ही स्पेस हो। प्लेस द हीरो हीरो सेक्शन एनिमेशंस आप कुछ भी कमांड दो। मेरा कमांड देने का तरीका, प्रॉम्प्ट देने का तरीका यही है। आप अच्छे तरीके से दे सकते हो ऑप्टिमाइज, क्योंकि मैंने कोई प्री प्लान नहीं किया है कमांड का, मैं जस्ट सोच रहा हूँ और लिख रहा हूँ। तो ऐसा कुछ है नहीं। आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से इसने दिया है। मैं जस्ट इसको ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ, कोई मैं पहले से कोई प्लानिंग करके नहीं आया था। लाइव आपके सामने आकर मैं सोच रहा हूँ और बना रहा हूँ। हमने ये भी नहीं सोचा था, डिसाइड भी नहीं किया था कि किस टॉपिक पे बनाने वाले हैं हम वीडियो लाइव जाकर। जस्ट हम लोग आए और लाइव आ चुके हैं और आपके सामने बना रहे हैं इस वीडियो को। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। और हम लोग एट द एंड एक अच्छी सी एप्लीकेशन बनाकर निकलेंगे। क्रोनो टास्क, आई थिंक आप देख सकते हो कि जो इमेज में नेम था ना, वही नेम इसने ले लिया है। बट हमें अगेन कोडिंग स्पाई टास्क ही रखना है नाम, तो हम लोग नाम को चेंज करेंगे। सी, यू कैन सी नाउ, अभी बहुत अच्छे तरीके से दे चुका है। जस्ट थोड़ा सा कट हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा अंदर ला सकते हैं, ठीक है। नॉट एन इशू, जस्ट हमारा देख रहे हैं कि एप्लीकेशन ठीक है। जस्ट थोड़ा सा स्पेस लगेगा। गिव गिव सम चैट्स। Okay, so give some gaps from all sides and make all content in center with some spaces. Also, app name change to coding spy task, ठीक है। मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया है, लेट्स सी, क्योंकि ये मुझे सेंटर में चाहिए एंड थोड़ा सा इधर से भी स्पेस मिल जाता तो बेहतरीन होता है, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ। सी, इसने ना टेस्टिमोनियल्स भी डाल दिए हैं और गेट स्टार्टेड एंड फुटर भी बहुत बेहतरीन डाला हुआ है। आई होप कि 100 पे ही होना चाहिए। ओके, मुझे इतना पे चाहिए था, 100, ठीक है। done। देखते हैं क्या चेंजेस आता है। हमने नाम भी चेंज कर लिए, बोला है कोडिंग स्पाई टास्क ही देने के लिए।
क्रोनो टास्क नहीं यूज करने के लिए, राइट। सो सी, आपके पास अगर कुछ डिजाइन्स है तो उसको भी अपलोड करके वैसे आप बनवा सकते हो बहुत इजीली। सो आप देख सकते हो कि कोड कर ही नहीं रहे हम लोग, राइट। कोड की तो नौबत ही नहीं आ रही है। जस्ट बाय गिविंग द प्रॉम्प्ट एंड हमारा बन रहा है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि कोडिंग करना बेकार है, बट ये है कि हमें चीज़ों को आसान कर रही है, राइट। हम देख सकते हो कोडिंग स्पाई टास्क हो चुका है। आ, बस थोड़ा सा गैप्स हमें नहीं मिला है। लेट्स सी, उसको देख सकते हैं। थोड़ा सा गैप हो गई है, राइट। मीन्स ये कट रहा है तो इसको थोड़ा सा एनिमेशंस को मिड में लाते हैं। गाइस, आप लोग कुछ कमेंट कर सकते हो, कुछ सजेशंस दे सकते हो। के मजीन अब्दुल्ला, हाय। ओ, हाय मजीन। आई होप तीन थ्री कंटेंट यूजर्स, 15 views, 4 content users. Thank you. Anand, you can try to speak in English. Yeah, sure, I can. Uh, Sure, sure. So see, I can see now, the site is looking good and all the content are in center. See, okay. So now, the front end part you can see is almost completed. We can do the we can improvise this screen, but for now we are going to create a backend and we will check. Yeah. So see, this is our kind of landing page that we have not expected, truly, but yeah, it's good. The name is Coding Spy Task, and you can see the sign in and sign up page. Sign up screen is also looking good. If you do the sign in, because there is no any authentication, so yeah, it will show you the dashboard part, and in the dashboard you can do the drag and drop, and you can also create a task. Yeah, but for now there is no any databases and backend code, so it will not store this particular whatever task you can create, right? So the very first thing, what we are gonna do, we will open the Firebase. We will create a project right there in the Firebase, and then we will utilize that Firebase backend, like we will utilize the Firebase as a backend. See, so what we want the authentication, right? We can log in with the email and all, right? By giving the email and password, we can sign up. So create a new Firebase project. Project name is coding spy, coding spy task. Okay, continue. Click on the continue. Continue. Okay, select an account, default account. Let's see, preparing our project. Please wait. Coding a spy task is being created. Uh, I hope there is more content users. I completed BCA degree 2025. Is there any internship? Okay, Majin. We'll let you know. Will let you know, Majin. We'll share you some details later. Yeah, you can see the projects have been created. We can just continue.
and the coding spy task has been okay. It's already created. I think okay, it was already created when I have created. See, coding spy task has been already created from Firebase Studio. I just missed that part. See, what we will do, we will click on the web and we want to use the coding spy. So we are gonna create a web application. Okay, so we need some. We have to register this application, uh, and then we will add the Firebase configurations file to the our application. Right, we will not use the Firebase SDK for now because there are something that we have to install npm and all. We will directly use this code to our site, right? How we can do? I'm saving Firebase config add into .env. We will need .env. I want to implement Firebase to right? Okay. Now here what we will do, we will continue to the console. We will go to the build and click on the authentication. Our app has been added. You can say coding spy. Now I will enable the authentication. Get started. Click on the get started. The next thing we have to enable the authentication. For the authentication, we will use the email and password one. See, we have to enable this. Click on the save button, and we have our authentication method created, sign in method created, email and password. We can also add different sign-in methods like Google, like continue with the Google phone, anonymous, and Facebook. All those things you can use, but for now we are using the email and password because if you want to use the Google and all, you must have a domain or your site has been hosted, right? Then in that condition you can use this. For now, I'm gonna use the email and password. Okay. You can see in the in the .env file, your code has been updated. How you can check? So okay, .env, you can go to this. We will copy duplicate this particular tab, and we will go to the code, right? The first time we are gonna open the code, but we will not do any changes for just a kind of. I just want to show you the .env file. That's why I'm opening this. You can see in the .env all the configs. You can see where in the variables all the configs files has been updated, and directly we will use this for the authentication and all, right? So you can see if you want to see the codes and all, you can easily see your app codes, your components as is here. You can see auth component, task component, and UI components are here, right? You can do any changes in the code. Also, if you have the knowledge of the code, uh, if you want to publish on the or you can say host on the your GitHub or something, you can create a repository from here. You can see the by default branch is a main, and you can like add your GitHub also here, right? But for now, we are gonna focus on the sign in and sign up, and you can check now is your sign in or sign up working or not. We will go to the site, we will do a refresh here, and we will click on the sign up, right? We will give a real credentials. So I will give the Anand, okay, Anand at the rate coding, okay, no, Anand dot coding spy at the rate gmail.com, okay, and the password I will give, okay. I'm gonna create an account. Welcome to Coding Spy. Task redirecting you to the app, okay. If we check in the users, see, we have a user created, right? Another coding spy, and the password is also here, but in the hash format, right? The created at 23rd third of the August 2025, and the user has been logged into this. If you see Anand, right? It is fetching the name and the email also. See, now you can create any task. Okay. So if I create a task, I will show you there might be a error that I am expecting. I will told you after this when I create a task added by Anand. Okay, can you guess what would be like what would be the issue here? If you see, if you do a refresh, the task is not added. You can check now. See.
The task has been not added. Why it's happened? Because in the Firebase, if you know about the Firebase, there is a term called you have to create a Firestore database, right? And till now we have not created any databases, right? So where it will store the your all the your all the task and all, right? For now they don't have any databases assigned. They don't have any collections created. It means in terms of SQL or something we call tables, right? But in the Firebase we call it collections, right? So there is no any Firebase databases. So we will the very first way we have to create a Firebase database, Firestore database. So create a database. Then we will remove this you can say demo task, and we will add a fresh new you can say, or you can say real data, right? So we will choose a location by default. We will click on the next, start in the production mode, create, and we are going to create our very first Firestore database. I hope the users have been increased. Okay, 25 views and 2 concurrent users. Okay, Margin, yeah, we are seeing how to contact you. Okay, let me Uh, update this. we'll share the detail We'll share in the comment. details. So, uh, I think you can just follow us on the Instagram. I think we are on Instagram or LinkedIn. You can follow us. Coding Spy, just search Coding Spy. The next, you can see we have a cloud file store. You can show the description where we have had mentioned the coding Yeah, yeah, spy sure, sure, LinkedIn sure. channel. See, so cloud file store created. If you see here, there is no any collections created yet, right? Because we have not created any collections. So what I want, let's talk about the like conditions what we want. So when we logged in, right? Whenever we want to delete this dummy data, right? After that, whenever we create a task, by default a collections created the very first time, it will create a collections name task, and then it will add all the tasks in the that particular collections, it means that particular tables, right? It will first check is there any tables name task or not. If not, then it will create a task name table, and then it will add all the tasks, right? So this what we want. So the very first prompt I'm gonna give, I want to remove all dummy data and want to add real data. I have enabled Firestore database. Can you create a collection and trust and add all tasks created by user that collections. Okay. So it will remove all the dummy data, and so whatever task we will create, it will add in that particular collections, task collections. Okay. So see, let's see. So I hope this video is helping you to understand what we are creating here, and it will also help you in your future. Like if you're not seeing in the live, if you're not watching in the live video, then I just must say you are like you are watching in some another day. But yeah, anytime you are watching this video, maybe it will help you to create your very first full stack application. If you are a non-coder or coder, it will help you to create your dream application that you are thinking if you are not from the coding background. That's all possible from the coding spy. So kindly subscribe our channel, it will help you. So we are going to back to our application, and if you see whatever the prompt we have given, based on that particular prompt, it is creating the all those tasks. It is writing the code. I have already shown you, like if you want to see the codes and all, it is also available. You can easily just basically just host to your repository, whatever repository GitHub accounts you have, you can host there. You can easily create. It is a kind of a virtual VS Code that we are seeing here. This is all by the Firebase Studio. It's a Google product. It's a totally free. There is no any charges, right? But there are some limitations that we will talk later.
So if you see, we have all whatever prompt we have given, all those things done, all the coding has been done. We will check here. If you see there is no any task, I just if you see there is no any task, error fetching task could not load your task. Please try again. Why it is showing? If you see there is an issue because missing insufficient permission. There is no any permission. It means we have not written any Firestore rules. For this your information, if you create any cloud file store databases, they have rules, right? In rules, what's happened? So you have to give kind of rules for each your collections, whatever you are doing in the file store, whatever is storing, whatever creating or updating, reading, whatever you are doing, you have to create a rules here, right? Based on the rules, it's a kind of rules that will restrict that will allow you to write, allow you to update, allow you to delete your task and whatever you are gonna do in your application. So very first thing we will create a task. Task name is test 1 created by coding spy and the date. I'm gonna choose the current date. Add task. Okay. Error creating task. Could not create the task. Please try again. Okay. Why? Right. So if you want to see the error and if you want to debug this, you do not need to go to the code and you have to know all those things, right? There is a very good features that you can utilize here. So sign in where you are writing the prompt and all. Use your credential, okay, and do a sign in. Okay, what do you do next? See, you can see the issue, right? When you logged in, runtime error, it's on here. And there is an option to fix this error. You do not need to fix this error, right? It will the Firestore Studio will fix this error. You just need to click on the fix error, right? It will fix the error. You don't need to do anything. You don't need to know the code. Yeah. So these kind of features it has, you can utilize this maybe so that's why we call now it is also giving the very optimized code, right? If you want to optimize your code, you just need to write optimize my this particular components code. It will optimize the code. There are lots of features in you can say Firebase Studio. Lots of applications are currently running in the productions, uh, which is from the Firebase Studio. Just you need to have a proper knowledge of the prompts, proper knowledge of the how you use all those things. If you have a knowledge of the Firebase knowledge is must, right? You must have the knowledge of Firebase. If you want to learn about the Firebase, we have already a video on the this channel. You can go and check Firebase. There is a video on the Firebase. You can check. Yeah, uh, it is fixing the bug. Till now, we can see the our content users here two only. Okay, thank you. It is almost 43 minutes. I think it will take 1 hour, and it will be a very awesome video. You guys, you can definitely gonna learn something new, and I hope you will create a application in this, and make sure just create an application and comment in our comment section. So yeah, we can have another video on that. See the issues and fixes, and if you do a difference here, error fetching task. Okay, so we can click on the one issue and there is a issue of the missing and insufficient permission. We can copy that. We will paste here. Create file Firestore security rules. Okay, it will create the Firestore security rules. You do not need to create the rules also, right? We will get this done from this Firebase Studio. So if everything is done by AI, then what the developers will do? See, there is something we definitely we cannot say AI will replace human, but AI is making our work very you can say easy or very efficient. You can utilize that things for the front end developers. Yeah, the time has gone. In the traditional days, the front end developers are writing the code for a simple login screen, simple landing page. That
that is taking the too much of the time, right? That time has gone. There is no need if you want to create a good landing page. There is no need to spend hours and hours on the particular things. There are lots of tools available in the market. There is not only the Firebase Studio. There are lots of tools that you can use and create an awesome UI. Thinking about the code quality and all, you can basically improve the code quality also. You can optimize uh, because they have a lots of experience, right? The models, the you can say trainings for that particular models has it's a huge training, right? It can give you a very clean code, right? Yeah, anyway, we are gonna check our application. So you can see here the Firestore rules they have given. We'll copy this and we can just paste on the here, right? We will update this Firestore rules. We'll click on the publish. So what is inside this rule? So they have created a match task ID and allow read update delete if auth request.auth not null and request.auth uid resource data user id. मतलब अगर आप you are the same user, then you are able to read update and delete, and for same for the create also, right? You must be a user here, right? You can create the very next thing what we will do, we will create a task test one, test and pick a task. See, task has been created now. Hmm. It's completed. It's overdue by 18 minutes, overdue by 18 minutes. You can check this in here also. See, our application is working now, right? If you are moving this, and you can update the due dates 24. Click on the save. Now there is no any, you can see there is no any you can say whatever it is coming, right? Due dates or something. If you just select the 23, then it's overdue by 19 minutes. So you can see we are able to create the task also, right? This is a very kind of a small example that I have given. I have created a full stack application. I hope you like this, and we will continue this kind of videos also in the future. This is the kind of demo that I have shown you, how you can create your full stack application. Uh, and see, I just want to show you the data in the Firestore. If you see, there is a collection created, task name collections, right? And if you go to that task collection, created at description, due date, and user ID also there, right? If you see, title is test one, subtask also, status pending, due date, description, created at, all those things are stored here, right? So this is a kind of application that I want to show you. You can create a like any kind of application using this. So that the things that I have talked in where this when I was starting this video, I have created an application. So I can show you what I have created. So it's a see, you can check out this. So it's a Pinterest. This what it is doing basically what you can do here, this is the all-in-one platform for the creative collaborations. Here you can create the fields, visual feedbacks, task management, knowledge sharing, and the secure password handling, right? It is also it is hosted and live. If you go to the sign in, you can do a sign in with the Google. Okay, you can do a sign in. The next thing, yeah, you can check the sign in is also working. You can directly do a sign in with the Google. The UI is very, I think you are liking this UI. It's very professional and modern UI. Uh, let it then the authentication. Okay, it is checking the user is existing or not. It may take some time. You can go here and check what is the content users. Okay, one. I hope you liking this video. It will be helpful for you guys. Yeah, I think could not sign in with Google. Please try again. Okay, let me check.
Yeah, now we are able to log in. Okay, that time some error occurs. Yeah, now it's okay. You can see you can create a new project. Okay, if you want, coding is fine. You can add pin here, right? You can upload any images, right? You can upload any images here. See, you do a refresh, the image is here, right? You can do a pin. So what you can do? You can just do a pin. This is a laptop, okay? And you can share with your teammates, right? There is a link copied, you can share with, and they can check and they can mark it resolved. Okay. There is the features of the password manager. You can add your passwords here. And coding is fine. Any URL, google.com, test@gmail.com, test. Okay. You can save this. Whenever the password manager, you can create a task, test, test, pick the date, save task, you can move it in progress, run. You can also create the journals. Right? So these are the features that I have created. You can check this out and check this out by yourself and do a feedback. You can comment it here. You just also create your own application and just subscribe our channel, like our videos, and yeah, why I'm saying to subscribe, because we are going to come up with a lots of you can say upcoming videos. We will go the live. We will also upload some videos here, and it is related to the AI and full stack development. We are continuously uploading lots of videos on the DevOps, app, and all those things related to techs. Tech. If you want to learn full stack, if you want to learn DevOps and all, subscribe our channel. It's completely free. We will come up with the lots of unique contents. Yeah, thank you. Thank you.